child is on another call. कौन सा? हाँ। हेलो जी, सबसे कंफर्म करनी थी, चीज़ें नज़र आ रही हैं सारी की, मुझे फिर बता दें कि नज़र आ रही है जी। वेबिनार की नहीं, आप स्केड्यूल में जाएं, आप स्केड्यूल में जाके हाँ कैलेंडर ज्वाइन कर लें और देख लें कि आपको मैं यार इधर पे 3-4 किलोमीटर आ रहे हैं, ठीक। तो मैं नहीं, कुछ भी नहीं निकला अब बस ना, वो उससे करके ना कंफर्म कर दीजिएगा कि आवाज़ आ रही है बस, जो अच्छी बात है। ओके जी, ठीक है, राइट। बस मैं 3 मिनट के बाद स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। 1 घंटे का लेक्चर है मेरा। ये बच्चे ना कोर्स तुमसे क्या रहेगा करेगा वैसे मतलब ड्राइंग क्या तारीख हो गया? सेकंड डेट नहीं देखनी, कब की डेट नहीं? सर इसकी 4 की है, 4-6 की? जी सर कर रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा, ठीक है सर उसने ना ज्वाइनिंग की साइन नहीं कराई थी, रिकमेंडेशन पहले कराई थी, तो कहते हैं नीचे ज्वाइनिंग के मांग रहे हैं एप्लीकेशन ऑर्डर्स के लिए। और सर इसकी 2 से आज से सर टेस्टिमोनियल है कि ले आओ, वीडियो करने वाली करना शुरू कर देंगे, 2 मिनट हैं। कैंसर है सर कल भी आए थे थोड़ी सी एक सर की तबीयत अभी ठीक नहीं है, उनको जी टेस्ट सर करना वो चाहिए, है ना? काफी है उनको भी। हालात की वजह से ना टेस्टिंग टाइम में, इस टाइम पे ना परेशानी नहीं करनी। मैंने अपना पूछा था इसका पीसीआर का जो है प्रेजेंटेशन वगैरह का आजकल थोड़ा सा प्रेशर आना शुरू है बोलने के बाद। नहीं अभी इंशाल्लाह सारी कर दूँगा। मेरे सिर्फ ये मैंने ना ये बस बना देने हैं एक पूरे हफ्तों के जॉनसन, पूरे हफ्ते के जॉनसन ना स्केड्यूल कर दिए करने, और उसके बाद जॉनसन ना वो हम मतलब 1-2 दफा ना होना तो फिर आगे फिर लटक ही जाता है। स्टार्ट कर लूँगा अपना लेक्चर 1 घंटे के लिए। सर फिर इनके प्रिंट आउट बाद में निकालो बस ये हो गया ना, स्टैम्प्स लगवा लो, मैं अभी शुरू कर दूँगा। ठीक है आप वहाँ से रखो ताज़े में आ ठीक है
Right, Bismillahirrahmanirrahim. My name is Uzair, and today we'll be going to talk about something about the quality assurance in e-learning. And I'm very happy to be here for the next 1 hour maybe. It was a very nice a couple of webinars that we had. This is the fourth in the series of the series, and we had this thing in our mind that we could have done. So in my presentation, I would be talking about few things, including how did we start the e-learning program that we had, and how did we manage it throughout the last 4 or 5 weeks. I've already mentioned, indeed, it all started after the lockdown in mid of the March, and we had some time. We required some time to really uh, see what can be done, how can we improve on these, and then eventually, with the help of the HEC and the UHS, we got a program which is named as Microsoft Teams. Now, Microsoft Teams needed to be it required to be structured, and for this structure we had to do lots of things. We initially had the development of the student of databases required. Then we need to develop the software interfaces, and finally we need to develop the schedules and how did we run this. So this is a small mind map kind of a thing which showed how did we start. If we talk about the first one, the development of students and faculty databases, we found that the first thing that we did was we asked to enter their information in a Google form that was not as detailed as is present in the hospital. So the first thing that we did was we sent this link to the batch representatives, and the batch representatives then helped us to develop this. So, and then we similarly needed to have another database for the teachers. So we asked, and we sent another link for the faculty to get registered. Finally, we had a new faculty members that keep on joining us. So we kept on updating this data, and it helped us a lot in registering first the students and then the faculty and then sending out invitation. The second important thing was the planning for the assessment, e-curriculum, e-learning platforms, faculty sensitization, and student sensitization. Once each of these was done, the first thing was e-curriculum. We had a meeting with the DME and the other people around, from the HODs and important people in medical education, who decided to change the current curriculum, and we shifted all the didactic part into the online lectures thing, and decided the skills portion would be done at a later date, and we have started working on it. Then we needed to develop an e-learning platform, which, as I have mentioned, is the Microsoft Teams. So we developed it took it over and started making an interface. We started with the faculty sensitization through an academic council meeting, and sending out messages to the other groups as well.
Then we needed to design the interface. In the design of the interface, we use Microsoft Teams, we developed soft flow sheets, and we use Zoom video conferencing as well, and then started our first test run on May 5. There were some acceptance issues where it is very obvious, with some minor glitches. Many of the faculty members and the students were not aware of the requirements, and finally there was a big issue of availability of hardware, both with the faculty and the students. We're talking about the second important thing was the IT team. The IT team was pivotal in maintaining quality of the delivery of this program. They gave us some technical support wherever it was required. IT team would be present in the offices of faculty members who wanted to deliver their lectures from offices. So the first time they did deliver, we had one faculty member, one IT team member there to help them out. Then they were also helped us in training the technical part, the computer parts, and they have been very nicely being incorporated in the whole team. They have a big role in the success or on the running of the program and the quality assurance. Then they were at the back of all the kinds of troubleshooting. Somebody is not even able to join from home, so we used to have video conferences, video calls being done by the IT department, and they would help them out. For the capacity building, we involved 4 people from the IT department. Initially, it was only one, Abid Saab, and then we had Umar and other people coming in who would ran the program very nicely. Couldn't we have been run this program if there was more than like 100 people in and 300 plus lectures, and then develop. This is the slide I've just mentioned. We then developed a schedule. This schedule was developed using an online link. All the departments were requested to send their weekly schedules to us. Once they were done, we requested them that the possible, let them know that this is the available time slots, and the departments then decided on to the number of lectures, and they also decided on which lecture to be delivered in which fashion. Then we had the we send out the invitations to students, and this was done through channels made in the Microsoft Teams. These channels were important because they were helped us in segregating first year, second year, third year, and fourth year from each other. We also developed separate teams for the faculty member. We developed separate channels for small groups for practical purposes. And even for postgraduate training, we're already in process of developing new channels, जहाँ पे we'll try to teach them some skills जो कम से कम methods हैं, ये वैसी चीज है जिसको हम skills को सिखा सकते हैं. Then we had now delivering 363. Today we completed the 363rd lecture actually, and to deliver this, the whole system had to go side by side, and without the help of all these people, it was really not possible to deliver so many of these lectures. Once we've done this, we believe that we need to ask the students about their feedback. This is the second feedback that we asked from the students. Students being a stakeholder and being at the receiving end, we believe that no program could be assessed and evaluated unless we have feedback from everyone. So we'll be sending out another feedback for the faculty at mid of this month, 15th of July, another feedback from the faculty to identify any other glitches that we can find. From this feedback, we got very healthy output, which was actually incorporated in the online lectures. We found that among the 523, many 195 and 186, around 400 of students will believe that the instructor was responsive to students' need and problem. This was the first and the foremost challenge that we had with the online teaching. We were not sure how to interact with 220 plus students in one session.
And the response coming from students, this is from all four or five classes, and they were very happy to interact with their teachers, and they believe that they were interactive. Then the material was well organized. They were happy with that. The recommended reading material were relevant and appropriate, and the online course objectives were clear. So this is again very healthy. I mean, somebody around 200 people, you add this 100, so among 500 students, some 279 believe that they was either very good, strongly agree, or somewhat agree. So we included them. We continued with the same objectives and contents. Then online sessions were manageable. We believe that would be difficult for them to get up in the morning during Ramadan, but then we came to know, no, it's not that difficult. Everyone was there in time, and we had a very healthy attendance throughout these lectures, irrespective of subjects. Then we have some people saying that the session would start in time. It was important for quality assurance. The content was shared during the lecture, and the schedule of the lecture was distributed day before the session. This again is a major quality assurance indicator that we had in our program, and we will continue to ask the same questions. Well, I will show you there were a few glitches, and how did we manage to overcome that. And I participated actively in the session. A large number of students can participate. Anyone can do. Here I want to mention a couple of faculty members who were very good in actually running these online courses, and in fact they would call out the number a student and then ask questions and interact with them, which kept students alive, and the lectures then was very interactive. There lots of participation. Everyone is on his toes, and there was not kind of a boring scenario where the teacher was just speaking out or the reading out slides. So I really appreciate those teachers who have taken lead and actually taught them actively in students. Then we analyzed the 330 30 odd lectures, excluding today. So we had 15 late starts. 15 late starts due to what reasons? The most common was that the link that we sent would go to the junk mail, and the teacher the faculty member would not be able to deliver the lecture. Second problem that we faced was, since we use these the students as a guests and the teachers as guests as well, so initially we were not sure how to overcome that, but the result was that for every lecture we needed to select the teacher as a presenter. This caused lots of problem. This caused lots of hassle. Many students were mischievous, I would say, and they would remove other member of the class and took it as a hobby while the teacher were away. So this was a problem, and we have sorted out, and we will be getting it was easily can be done if we get faculty emails or student emails maybe for the faculty and get them registered. So we are in the process of that. Internet connectivity was a problem in 8 lectures, where actually when we're trying to connect, especially 9:30 to 10, when everyone gets up with the locked-in scenario, the quality of the Wi-Fi internet goes down, and we had certain problems while connecting, so we got late again. These are not among these 15 late starts, so we had a total of 23. 4 lectures among 300 plus postponed, one maybe because another lecture was going on and it took a bit longer and there was much less time left for this topic. A couple of time I was primarily involved because I forgot to invite the student, the teacher into the right class, and that caused problem. Only 3 lectures got cancelled due to very genuine reasons, and I think that this is only a small amount, so a small number, and we did the team well with the running of the show. We again asked the students for feedback. In the feedback, we again got very healthy, feedback from the students. It would say that there is quite good
is quite good and is need of the art. We just like the normal lectures we used to have in classrooms, and efforts are appreciated. Or the idea of online session is a great effort, no doubt. But then we were found problems. We found people telling us about internet connectivity issues, and they thought that and this is true. Many areas and even in Pakistan do not have a good internet connectivity, and they requested to send video lectures or recordings so that whenever they get a chance, they can go for it on a YouTube and just see them. When we move on to the punctuality, again, many students would believe that if some class is going to start at 9, it should start at 9, and we send feedback to the faculty member to actually log in maybe 5 minutes before the actual time so that this problem would have been solved. Many students requested for assessments. So we already developed a team for assessment. We are very happy that one of the stakeholders, the students themselves, are aware of the fact that the assessment drives learning. So from 15th of July onwards, we'll be having planning a number of assessments, different styles and different ideas. But to start with, we're going for the MCQ test to test all the didactic part that has been taught for the past 6 or 7 months. With interaction, some students had problem with interaction with the teacher, and they believe that the video of the teacher at least or the faculty member should be visible to them. So in our webinar on Monday, I think on Professor Alia, she did a very good presentation, and it taught us how to really present a good online lecture, because this is a different specialty. Contents, a few people believe that the contents was humongous and they have been bombarded, but this is how the curriculum works. The new curriculum, the curriculum has to be derived from the original curriculum of the PMBC, and we are not at the moment changing anything with the content. Yes, the number of lectures have been increased, and the content delivered in 1 hour or 45 minutes have been reduced. So we started with the following on the feedback. We started a YouTube channel. Now the YouTube channel is active. We have pediatric lectures on Netherlands that have last 4 days. All our website. We will be uploading the lectures. There is a problem with it. This is not an easy task, because when we record a lecture, there is lots of raw footage that is being there. The teachers cannot end the recording, and it has to be done at the back end. So at times the recordings are longer than the actual lecture, and we need to cut them, download them, then trim them, and then upload them again on YouTube. These with the Microsoft Teams, they are actually uploaded on the Microsoft and they are uploaded on Microsoft Stream rather than YouTube directly. And this is actually the last part of what we have done in the last week. Starting from May 5, with absolutely no infrastructure to run webinars and or online programs. Now we have a very nice faculty and a very, what you can say, educated IT team. Capacity is being built who can run webinars regularly, and we are very happy with this department at our DME. At the second part of my talk, I just wanted to point out something about the assessment. There are lots of questions about assessment, and we believe that in a number of meetings with the team, we need to really focus this online learning program to really have a very good quality assessments. And once we had good quality lectures that have already been done, that already been given, and we have a quality improvement webinar for giving good online lectures. Now the second phase was 2 actually webinars on how to assess using MCQs and Google Forms
and they are absolutely fantastic, really very nice, and both of them are available on YouTube. If any one of you didn't have the chance to attend those webinars, I would really advise you, suggest or request you to go to the YouTube channel that we have and go through them. They're 1 hour a piece, and they are absolutely fantastic. So 2 points that I would not go into the details. Just I want to focus on few things when you are planning an assessment: the validity and the reliability. If you look at this, this is a notice. I just copied it and typed it, but this was written on one of the lecture halls in another college where I was working. It says a final year MBBS midterm assessment. Please note, midterm assessment for subject of surgery will be done on this date. Please bring in your copies and write in papers. The test is short essay type and there are 5 questions. If you look at the list of topics, it says tumors of mandible, tumors of maxilla, inflammatory condition of oral cavity, benign conditions of tongue, malignant conditions of tongue, oropharyngeal cancers, cleft lip and palate, benign malignant conditions of salivary glands, neck dissections, major flaps in head and neck cancer stage. Now, if I'm a student, if I'm in a wise finalist student, when I look at this, so I already know that there would be only 5 questions. And since they are short essay questions, so one question has to be from one topic. So what I would do, the best thing to do is to really, to cut them the items that I do not like. So tumors of maxilla, mandible, benign conditions of tongue, cut. Oropharyngeal cancers, cut. Cleft benign malignant, maybe yes, but cleft lip and palate, less likely. So still 5 questions and 6 important topics. So if I cut now, I would like to remove this one. Good. I can pass this test if I just go through these 5 topics instead of 13 topics, which means a wise student would not read all those students at all, because the face validity of this test shows the face validity of this test shows that it is not meant me to read all the syllabus, but I can just read part of it and I can get to it. Even if one question does not fall from any one of these, but I think I will still be able to get 80% marks. So if I am very unlucky and there is another topic which is very, very less likely, still I am going to pass the test with 60% marks. So you need to assess the test which actually this slide says. The validity asks the question, does the test measure what it is supposed to measure? So if I want to take but if I have a paper with only 2 questions and there are 13 titles, so it's very, very difficult to test the students, and I won't be able to know whether the student knows everything or not. Next important thing is construct validity, or first we talk about the content validity. The content validity, I'll talk to you in a moment again. It is a substage of upper limb, but since being a teacher, I think that hand is more important. I put all the questions from the hand. So the content is not good now. The content is not valid because the test is only testing a substage for hand and not for the upper arm or the axilla or the brachial plexus. So what we need to do is we need to do a blueprinting and use a mind map when we are designing an assessment. Thing is construct validity. The construct validity means that is all about what
Professor Shehzad told us the other day how to construct a good MCQ. What are the problems? What are the problem in the construct of the item? And I would really again request you to understand the concept of construct validity. You need to go through that 1 hour webinar by Professor Shehzad. Concurrent validity means if I take a test at 2 points, we would be having the same results. So maybe it's if I use the test on different subjects, the test results would be different, but we need to have a concurrent valid test. If we talk about predictive validity, our test should be designed in a fashion. I mean, if someone has passed 4 tests in anatomy, one is hand, the other is arm, the other is forearm, and the final one is axilla. So the predictive validity should say that any type of questions, maybe different questions, but on same subject, when would the student appear in the final year exam? If these tests are good enough, if he passes these tests, he should be able to pass that test as well. So the quality of the tests that you take now should be good enough for the student to be able to pass in final professional exam as well. So मेरा अभी का क्वेश्चन इतना अच्छा होना चाहिए, मेरा अभी का पेपर इतना अच्छा बना होना चाहिए, ताकि अगर सिर्फ मैं आइडेंटिफाई करूं उन स्टूडेंट्स को जो अभी इसको पास कर लेते हैं. We can make it a part of a formative assessment or a summative assessment, but we need to really know that this student, since in July he has passed this test, so he is good enough to pass the professional, क्योंकि उसके competencies जो हैं, knowledge base उसका इतना अच्छा है कि दोनों कर सकते हैं. Then we talk about the reliability. Reliability is much more with the medical education part. जब आप कोई टेस्ट बना लेते हैं, जब कोई असेसमेंट तैयार कर लेते हैं, so we need to see on those papers, on the questions, कि वो questions क्या इस तरह के हैं कि the student should achieve similar score on different administrations of the same test. ये तो नहीं है कि आज क्योंकि लेक्चर्स हो रहे हैं तो इसलिए वो उनको कल का लेक्चर रिकॉल से उसने कर लिया और फिर 1 माह या 2 माह के बाद उसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही नहीं था और वो टेस्ट बिल्कुल ठीक नहीं हुआ. तो दैट इज नॉट अ रिलायबल टेस्ट. Intra-rater is important. A marker should award the same grade to a paper when given to a paper on repeated occasions. So again, construct उसका ऐसा होना चाहिए कि जिसके बीच में एक ही एग्जामिनर एक ही काम करते हुए एक ही बेंचमार्क को यूज करते हुए सब स्टूडेंट्स को एक ही तरह से ग्रेड कर सके. सो दैट इज अ रिलायबल टेस्ट. ये ना हो कि मैं एक स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स दे दूं, दूसरे को दे दूं, बिकॉज जो मेरी चेक लिस्ट होगी वो इतनी अच्छी डेवलप होनी चाहिए कि उसकी वजह से हमारा सर्व के ऊपर एक ही चीज़ एक्ट करती है. सो की बनाने के लिए जो हम बनाएंगे, कि हम बना भी रहे हैं, उसके ऊपर अगेन मेडिकल एजुकेशन और हमारा जो वो फोकस ग्रुप है उसका बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि वो देख सके कि हम किस चीज़ को कैसे यूज़ कर रहे हैं और वो जो हमारी स्कीमा बन रहा है, जो की बन रही है, वो इतनी जनरलाइजेबल है कि उसके अंदर हम सबको एक ही तरह से टेस्ट कर सकें. लास्ट थिंग इज इंटर-रेटर. 2 मार्कर्स मार्किंग द सेम पेपर इंडिपेंडेंटली, लेकिन उसका दिस आई एम टॉकिंग अबाउट एससीक्यूज, क्योंकि एमसीक्यूज में जैसे की आ जाती है तो देयर इज एब्सोल्यूट इंटर-रेटर रिलायबिलिटी एंड देयर इज नो इंटर-रेटर कंफ्यूजन. सो एक की है और वो इतनी स्टिफ है कि कोई भी दे दें, एक ही टाइम पे आप सारे स्टूडेंट्स को भी दे दें और उनको टिक मार्क करने को दे दें. सो उसकी रिलायबल है टेस्ट, क्योंकि उसका रिजल्ट बिल्कुल एक सा आएगा. So last 10 minutes maybe for talking about something about blueprinting and concept mapping. I'm sure आपको इस चीज़ का पता होगा, लेकिन हम ये समझते हैं कि जो हमारे we all should be on the same page. What is blueprinting? Blueprint is as if किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी प्रोजेक्ट का नक्शा, उसकी स्कैफोल्ड बनती है. सो उसमें कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी होनी है, उसका एक ब्लूप्रिंट होता है. इसी तरह जो हम असेसमेंट कर रहे हैं उसका एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए और उसके ऊपर हमें बहुत सारा काम करना चाहिए. और it actually makes life easier for the assessor.
एंड जो लोग पेपर करते हैं। फॉर एग्जांपल एक जीआईटी का हम टेस्ट करना चाह रहे हैं और उसमें हमने 40 टेस्ट रख लिए, 40 क्वेश्चंस रख लिए और टॉपिक हमने रख लिए जीआईटी। सो अब ये है कि वो उसको किस तरह से अरेंज करें, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखें कि हम चाह ये रहे हैं कि स्टूडेंट जो है वो हर टॉपिक को पढ़ा हो सके। सो वी नीड टू डिवाइड द टॉपिक्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। मसलन जीआईटी की इन्फ्लेमेशंस, इन्फेक्शंस, कैंसर्स और कंजेनिटल, ये एग्जांपल है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन यू नीड टू ब्रॉडली कैटेगराइज देम इनटू समथिंग ताकि आप उसको ग्रुप कर सकें और बाद में उसको टेस्ट कर सकें। जब आपने इसको 4 हिस्सों में टेस्ट कर लिया तो अब हर सेक्शन में से आपके 10-10 सवाल आएंगे। सो दैट वुड बी अ बैलेंस्ड असेसमेंट। आपको पता चल जाएगा कि किस स्टूडेंट ने पूरे का पूरा चैप्टर पढ़ा है और किस स्टूडेंट ने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है। जिस स्टूडेंट ने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा होगा उसने सिंपल इन्फ्लेमेशन पढ़ी। सो इन्फ्लेमेशन पढ़ने के बाद वो ये काम कर सकता है कि वो सिंपल उसको सिर्फ एक चीज ले ले और बाकी चीजों को यूज ही ना करें। सो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम इसको आइडेंटिफाई करें कि कौन सी चीज़ जौन सी है वो ब्लू प्रिंटिंग के थ्रू हम उसको इक्वली बांट सकें। अब अगर आप इसमें देखें कि बनाने वाले मैंने ये किया कि मैं क्योंकि इन्फ्लेमेशन पढ़ा रहा हूँ आजकल बड़ी कॉमनली इन वोग है, सो मैं क्या करता हूँ कि क्लिनिकल फीचर्स के 8 सिनेरियो डाल देता हूँ। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने एपिडेमियोलॉजी के भी 2-2 सवाल डाले जो असल में डलने चाहिए थे, 2 डलने चाहिए थे, सो यहाँ पर हमारा पेपर जो है वो सिंपल इन्फ्लेमेशन से ही मैंने 18 क्वेश्चन यूज कर लिए। सो 40 क्वेश्चंस का एमसीक्यू है और उसके बीच में से मैंने 14 क्वेश्चन सिंपल इन्फ्लेमेशन से डाल दिए। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जब तक मैलिग्नेंसीज पे पहुंचूंगा, सो प्रोबेबली मैलिग्नेंसी से पहुंचते हुए मेरे पास सिर्फ 2 या 3 सवाल रह जाएंगे और मैलिग्नेंसीज क्योंकि इम्पोर्टेंट भी हैं और कंपोनेंट भी हैं, सो वो सारे का सारा मिक्स हो जाएगा। सो इसलिए हम ये चाहते हैं कि जब आप टेस्ट बनाएं तो सबसे पहले आप उन चीज़ों को एक फ्रेम में पहले बना लें और डिसाइड कर लें। फॉर एग्जांपल एनाटमी में, फिजियोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, सब में थोड़ी सी चीज़ें फ़र्क होंगी, लेकिन स्ट्रक्चर आपका स्कैफोल्ड एक होगा। एग्जांपल ये है कि हमने रीजनल एनाटमी पढ़ाई अपर लिम्ब की और अब हम उसका टेस्ट करना चाह रहे हैं यूजिंग एमसीक्यूज। सो एमसीक्यूज का टेस्ट करने के लिए या उनका नॉलेज का टेस्ट करने के लिए वी डिवाइड द आर्म इनटू हैंड, फोर आर्म एंड एक्सेट्रा, और जो सिस्टम है वो उनको डिवाइड देम इनटू स्केलेटल सिस्टम, वैस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर, लिम्फेटिक्स एंड नर्वस सिस्टम। और टोटल हमने दे दिया कि जी 40 नंबर का पेपर बन रहा है और 40 एमसीक्यूज बन रहे हैं। नंबर तो हम बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन ये कि हम इसके अंदर हर हिस्से में से 10-10 सवाल आएंगे, तो फिर ये एक बैलेंस्ड पेपर है, ये एक वैलिड पेपर है, क्योंकि इसके कंस्ट्रक्ट के बीच में, इसके कंटेंट के बीच में वो सारा एरिया जो सा है वो कवर हो रहा है जिसको हम टेस्ट करने जा रहे हैं। अगर हम ये करें कि कंटेंट के बीच में हम करेंगे जी हैंड बहुत इंपॉर्टेंट है और हैंड के वैस्कुलर सिस्टम के बीच में 6 सवाल होने चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि 2 ऑप्शन है, या तो आप एक्जिला को भूल जाएं और वो स्टूडेंट को मिस कर जाएं कि जिसने एक्जिला पढ़ी ही नहीं लेकिन फिर भी पास हो गया, या दूसरी सूरत ये है कि मैं हैंड ही में से क्वेश्चंस बाकी हिस्सों में से कम कर दूं। और ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा वो हमारा फोकस ग्रुप इन कोलैबोरेशन विद हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स एंड सीनियर फैकल्टी, कि क्या एक स्कैफोल्ड होना चाहिए एक पेपर में कि सारे एरियाज भी कवर हो जाएं और आपके एंड में जो रिजल्ट आए वो सारे का सारा जस्टिफाइड हो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। You cannot just identify a borderline student from a good student, from a wise student and a bad student just by asking particularly, क्योंकि आजकल कोरोना फैला हुआ है तो लेट्स इन जीआईटी के बीच में सारे के सारे क्वेश्चन हम कोरोना के डाल दें। सो वो कंकरेंट नहीं है। डेंगी का जिस तरह पेपर था तो डेंगी के क्वेश्चन पर्टिनेंट थे इन 2011 एंड 2012
और अगर तब आप डेंगू के क्वेश्चन डालते तो शायद आपको आंसर्स ठीक आ जाते, अब नहीं आएंगे। आजकल कोरोना इन है तो इन्फ्लेमेशन, जीआईटी, कोरोना और आप इनको सारों को डाल देंगे तो शायद अभी आपका टेस्ट तो ठीक आएगा, बहुत सारे आपके नंबर, बहुत सारे स्टूडेंट्स आप ठीक आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेकिन डाउन द लाइन एग्जाम नवंबर दिसंबर में अगर ये पेंडेमिक खत्म हो जाती है तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस इररिलेवेंट होंगे और उसकी बजाय दोबारा रेलेवेंस मैलिग्नेंसीज की बढ़ जाएगी और क्वेश्चन उसके इंपॉर्टेंट होने शुरू होंगे। सो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और किस चीज़ को आप पहले करना चाहते हैं। सो this is again something that I would request you to go and read again. There are in MCQs, जैसे शहजाद साहब ने बताया था, there are multiple types of questions to cover different types of subject. You have a big syllabus और जो आप ये कहते हैं कि जी गुड क्वालिटी जो है हाई क्वालिटी लर्निंग की स्किल्स के साथ जो है MCQs आप नहीं दे सकते। सो आप ये करेंगे कि आप उनको वहाँ पे ट्रू फॉल्स दे देंगे। ट्रू फॉल्स बहुत सारा एरिया कवर कर लेता है, लेकिन प्रॉब्लम इसके तरफ ये है कि यू हैव अ 50% चांस ऑफ गेसिंग। सो स्टूडेंट्स कैन गेस 50% करेक्ट, 50% रॉन्ग। सो यहाँ पर ये ड्रॉबैक है, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप 200 MCQs ट्रू फॉल्स के हिसाब से दे देते हैं, ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस दे देते हैं, सो आप 200 कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली चेक कर सकते हैं, which is a very good number. Then we have MCQs saying a C type MCQ, lower quality, easier made. It contains an option A and option B, both or neither item. We have K type जिसमें complex true false आ सकते हैं. Then we have a X type which is simple true false item, and simulator as patients problems की हैं. We are not talking about these at the moment क्योंकि ये interaction, human interaction आ जाता है. Other type is a one best type. We have an A, a B and an R. A में 4 और more option होते हैं, single item ठीक होता है, and B is 4 और 5 option हैं और single best इसके बीच में से कई, जैसे हमें बताया था उस वेबिनार में कि इसको बनाना मुश्किल है टाइप बी को. The third type is an extended matching. प्रोफेसर वारिस फारूका ने इसको यूज़ किया था and our practice went very well. और एक और रिक्वेस्ट करूंगा which will be talking in future that we need to have a feedback performer. आप लोग जो भी टेस्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक मेरा ख्याल ये है कि एनाटॉमी डिपार्टमेंट टेस्ट प्लान कर रही है, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट प्लान कर रही है. सो आई वुड रिक्वेस्ट देम टू डेवलप फीडबैक ऑन दैट असेसमेंट एज वेल. That would help us identify the glitches and the problems of running an assessment using Microsoft Teams and Google Forms. Remember, medical education की पाकिस्तान की कम से कम हिस्ट्री में तो we have never had assessment at this magnitude. So we need to have stakeholders on board with us. Already faculties with us, universities with us, administration with us. Students का अभी तक जितना काम है वो हमारे साथ हैं, student representatives हमारे साथ हैं. So the final जो इसका अच्छा सा outcome बनेगा वो feedback हमें चाहिए होगा from the students once they go through these tests कि उनको क्या problem आती है, and we will try to solve those problems जो हम ये समझते हैं कि इसके बीच में हम improvement कर सकते हैं. So before I end this talk, I'd like you to, so very recently this is something different. So Principal Saab has devised a SIMS facilitation center for students and alumni. और इसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि we think कि जो students हैं बेसिक्स क्लासेस के या उनके पेरेंट्स हैं या जो एलुमिनाई हैं यहाँ से छोड़ गए हुए हैं, उनको अगर हॉस्पिटल में कोई काम है, कॉलेज में कोई काम है, तो उसके लिए उनके लिए कोई ऐसा पोर्टल होना चाहिए कि जहाँ वो अप्लाई कर सकें
जहां वो आके ऑफिस में बैठ सकें और जगह जगह ऑफिस में घूमने की बजाय वो आकर हमें इन्फॉर्म कर दें और यहाँ से हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज़ जो उनसे हैं और हमारा जो एक सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं वो उनके सारे काम कर सकें, टेस्ट वगैरह करवा सकें, किसी कंसल्टेंट को दिखाना है तो उस कंसल्टेंट के साथ कंसल्टेशंस करवा सकें। सो ये एक ऑप्शन है और ये वेबसाइट के ऊपर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी हुई है और हम इसको लेके जाना चाहते हैं। अगेन आई वुड रिक्वेस्ट ऑल दी फैकल्टी मेंबर्स एंड अदर पीपल हु आर लिसनिंग टू दिस वेबिनार कि वो हमें गाइड कर सकें कि हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। Finally, if you have, I thank you very much for listening to this session. I'm going to add my mobile number. If you have any questions, so you can WhatsApp your questions here, and I would be waiting for 10 minutes maybe. If I get questions from here, so I would be happy to answer those. Oops, this is okay. I'm trying to do something. Hello. जी जी अच्छा मैं आपको दिलाता हूँ, मैं आपको आधे घंटे में कॉल
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। नहीं कब से नहीं आ रही? ठीक है अब ठीक, अभी थोड़ी देरी हुई है, अभी जब आपने वो नंबर दिया शेयर करवाया ना उसके बाद से आवाज रुक गई। चलो फिर तो दोनों बातें इंपॉर्टेंट बताने वाली। जो एक क्वेश्चन एक पूछा है डॉक्टर मैं एक मिनट बताता हूँ। डॉक्टर आमिना ने कहा है कि जी फीडबैक उनका स्पेसिफिक क्या है। सो मैंने बताया कि हमने स्पेसिफिक जो है वो किसी एक फैकल्टी मेंबर के लिए फीडबैक नहीं दिया, क्योंकि स्टूडेंट्स वुड नॉट बी एबल टू रियली बी वेरी ऑनेस्ट विद दैट। लेकिन अगर कोई फैकल्टी मेंबर चाहता है तो हम स्पेसिफिकली उस ग्रुप के लिए जॉनसन अब भिजवा सकते हैं। जो फैकल्टी का जो भी रिस्पांस हमें आएगा वो हम उस फैकल्टी मेंबर से शेयर कर सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन डॉक्टर अफशा ने पूछा कि जी हम जौन सा है वो कैसे कर सकते हैं, वैलिडिटी कैसे असेस कर सकते हैं। हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। वो काम हम ये कर रहे हैं कि जो हमने फोकल पर्सन आपके डिपार्टमेंट से लिया है वो इसको इसलिए लिया है कि हम उसके साथ बैठेंगे, पेपर जब आ जाएगा तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उसकी एक ब्लू प्रिंटिंग सी, बहुत निटी ग्रिटी जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें एक आइडिया होना चाहिए कि ब्लू प्रिंटिंग के बीच में हम क्या कर रहे हैं। और हम सजेस्ट ये करेंगे कि अगर आप 5 रीजन्स का टेस्ट कर रहे हैं, सो 5 रीजन का टेस्ट एक टेस्ट से नहीं होगा, उसकी फेस वैलिडिटी ही नहीं है। सो इसलिए ज़रूरी है कि आप उसको ब्रेक कर लें इन 2 और 3 पेपर्स। क्वेश्चंस हम इकट्ठे बना लेंगे, लेकिन हम क्वेश्चंस की तादाद ज़्यादा कर लेंगे और इवेंट्स बढ़ा लेंगे। सो मे बी हर हफ्ते जो है वो एक टेस्ट जो सा ना वो हम उनको करवा लिया करेंगे उस क्लास को। तो इससे जो सा है वो हमारे असेसमेंट की वैलिडिटी बहुत बढ़ जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा क्वेश्चंस, ये मुझे पता चल गया कि आई एम म्यूटेड एंड सॉरी फॉर दिस। जी एक और क्वेश्चन ये था कि आप कब असेसमेंट क्या 15 से ही शुरू होनी है? असेसमेंट 15 से, हम 15 से तो लाजमी शुरू करा दें। अगर कोई इससे पहले शुरू करना चाहता है तो वो करवा सकता है, हम उसको फैसिलिटेट करेंगे उसे पहले करने के लिए। हमारा काम बीच में क्या होगा? हमारा काम बीच में ये है कि हम बैक एंड के ऊपर आप जब टेस्ट ले रहे होंगे आपको हम वैसे ही स्केड्यूल करेंगे टेस्ट, आप लिंक खुद शेयर करेंगे, आप खुद अपना टेस्ट लेंगे। हम बैक एंड के ऊपर आपको ये हेल्प कर रहे होंगे, डीएमई डिपार्टमेंट और आईटी डिपार्टमेंट, कि हम जो लिंक आपके पास होगा उसी टाइम के ऊपर आप हमें उस एज एन कोलैबोरेटर ऐड कर लेंगे, ताकि अगर आप नहीं समझते कि जी फीडबैक कैसे होगा, प्रेजेंटर कैसे बनेंगे, सो वो सारे का सारा काम हम आपको टेक्निकल एंड पे पीछे देते रहेंगे। बाकी टेस्ट रिजल्ट्स क्योंकि ऑटोमेटिकली जाना है, वो बहरहाल स्टोर हो रहा है, सो उसको आप बाद में स्टूडेंट सेक्शंस के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने डिपार्टमेंट के साथ शेयर कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, उसमें हम कुछ भी नहीं इस तरह से करेंगे। डॉक्टर फातिमा कहती हैं कि very nice talk, cleared my many points. Asked you after we have made MCQs for assessment, will there be a checking on their validity? लेकिन reliability हम अभी चेक नहीं कर रहे हैं, लेकिन वैलिडिटी जो है उसको चेक करने का कोई ऐसा कोई वो नहीं है, इसको क्या मैं कहूँगी जी, कोई सांचा नहीं है कि उसके बीच में फिट करके हम कह देंगे नहीं जी दिस इज अनफिट। हम सिर्फ आपको छोटी सी सजेशन दे देंगे कि आपके पेपर के बीच में फलाने रीजन से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो या तो क्वेश्चंस आप कम कर लें, दूसरे क्वेश्चंस ऐड कर लें, या कोई अगर ऐसे एरियाज हैं वो उसको कम कर लें। जो क्वेश्चन ये है कि जी डीएमई डिपार्टमेंट विल बी कंडक्टिंग असेसमेंट्स फॉर वैलिडिटी, नहीं, हम स्पेसिफिक सेशंस नहीं कर रहे होंगे। आपका डिपार्टमेंट जब कहेगा कि जी हमारा टेस्ट तैयार हो गया है, सो वो आप हमसे एक दफ़ा उसके टॉपिक्स क्या हैं, हमें क्वेश्चंस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए कि जैसे मैंने आपको आज दिखाया है कि ब्लूप्रिंट के बीच में हमें दिखा देंगे जी जीआईटी का पेपर है और उसके बीच में सारे के ऊपर स्प्रेड है। सो अगर सारे के ऊपर स्प्रेड है तो वो है, हम सिर्फ आपको अगेन थोड़ा सा ये बता देंगे कि जैसे ये क्वेश्चन, जैसे ये टेस्ट जो मैंने आपसे शेयर किया है, दिस वाज शेयर्ड एंड एक्चुअली वाज टेकन इन अदर कॉलेज, यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमारे भी बहुत सारे पेपर्स इसी तरह के हैं कि जिसके बीच में वो फेस वैलिडिटी ही नहीं बनती, कंटेंट के ऊपर तो बाद में आते हैं।
सो इसको इज अ गुड चांस, इज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि हम अपनी फैकल्टी के साथ मिलके अच्छी क्वालिटी की असेसमेंट करना शुरू करें। क्वेश्चन के रिजल्ट्स कहाँ जाएंगे? जब आपके क्वेश्चंस होंगे, जब रिजल्ट होगा, सो उसके बीच में एक ऑप्शन है, जैसे हमने कल डिस्कस भी की थी वारिस साहब वाले वेबिनार में, कि हम उसको रिलीज कर सकते हैं आफ्टर सम टाइम। सो वंस, और आप उसी वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन हम सजेस्ट ये करेंगे कि रिजल्ट एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए, आपको 2-4 स्टूडेंट शोर मचा दें, सर आपने बंद जल्दी कर दिया, आपने क्यों बंद कर दिया, अगर आप ना बंद करते तो मैं टॉप कर लेता, और आप ये समझते हैं कि हाँ हो सकता है इनको 5 मिनट का ग्रेस देना चाहिए, सो आप अपने डिपार्टमेंट पॉलिसी में उसको 5 मिनट दे सकते हैं। सो रिलीज रिजल्ट तब करेंगे जब आप एक दफ़ा डिसाइड कर लें कि अब आपने इस लिंक को दोबारा ऑन नहीं करना, क्योंकि एक दफ़ा आप लिंक ऑन करेंगे और रिजल्ट चला गया होगा तो वो बहुत आसान है, सिंपल। उसको करने के बाद जौन सा है उसको आप सब ये आपस में उसको शेयर कर लें, क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि अब वो शफल नहीं होगा, वो क्वेश्चन एक ही तरतीब से आ रहा होगा, सो उसके बाद नहीं हो सकता। एक और क्वेश्चन है, डॉक्टर आमना ने पूछा है कि हाउ टू एक्सेस यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल ओपन है, आप सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सर्च करें तो वो आप डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाएंगे। अगर फिर भी इशू आए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके साथ डायरेक्ट उसका जो लिंक है वो शेयर कर लूँगा। अच्छा, एक और फिर क्वेश्चन है कि विल दीज असेसमेंट्स विद इनकॉर्पोरेटेड इन आवर रूटीन ऑनलाइन टीचिंग स्केड्यूल्स? यस, हम 15 तक लेक्चर्स करा रहे हैं, 15 के बाद सिर्फ फर्स्ट ईयर एनाटमी के लेक्चर्स हो रहे हैं, बाकी क्लासेस जो सी हैं किसी के 1-2 लेक्चर अगर रह गए हों तो वो हम कंप्लीट करा देंगे, और होली सोली हम फोकस करना शुरू कर देंगे, तो हम सारे का सारा जो है फोकस जो है वो शिफ्ट कर देंगे असेसमेंट के ऊपर। और वैसे भी हालात भी थोड़े से बेहतर हो रहे हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि डायरेक्टिव पार्ट जो है वो हम 15 जुलाई टू 1 अगस्त आप जितने टेस्ट करवाना चाहते हैं करवा लें, हम वो पूरे के पूरे कंप्लीट कर दें। ठीक है जी, वो इट्स नॉट क्लियर, रीजॉइन इट पे एंड करूंगा तो फिर ये नहीं आएगा। सो आई थिंक थोड़ा सा आवाज में इशू आ रहा था, सो ये मैंने रीजॉइन किया, पता नहीं कि कितना। ओके, आई एम नॉट श्योर कि आप उससे सुन सकते हैं, यहाँ तो क्लियर है आपकी सर। चलो अच्छी बात है। देखिए, और मेरे ख्याल कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है बीच में से। हमने एक और ग्रुप बनाया है फॉर दी फोकल पर्सन, और ये फोकल पर्सन जो उनसे ना वो अब हमारे पास जो असेसमेंट वाला कंपोनेंट है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखे हुए होंगे। कुछ डिपार्टमेंट्स ने स्टार्ट किए हैं प्रैक्टिकल्स, हमें उसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, स्टूडेंट से भी हम फीडबैक लेंगे, और हम फिर थोड़ा सा और इसको मूव करना चाहते हैं। कोई और डिपार्टमेंट वेबिनार करना चाहता है ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक कोरोना, लाइक किसी और चीज़ के ऊपर भी, सो यू आर वेलकम। अब हमारे पास अवेलेबल स्पेस है, हमारी कैपेसिटी बिल्ड है, हमारी डेटाबेसेस कंप्लीट हैं, और हम वेबिनार्स इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन दोनों करा सकते हैं। इन द एंड, since there are no more questions, so I am very thankful to you for listening to me throughout this hour, and Assalamu alaikum.